हेलो स्टूडेंट्स। आज लेक्चर 11th है हमारा और आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं रिकॉग्निशन एंड द नीड ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और जिस वैकेंसी के लिए आप जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट उसके बारे में आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि उस पोस्ट का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द जॉब रोल ऑफ दैट डेजिग्नेशन एंड उसकी क्या ज़रूरतें होती है, क्या ड्यूटीज होती हैं। तो वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रॉम हाउ टू बिल्ड टू हाउ टू स्टार्ट, कैसे बनाएं और कैसे स्टार्ट करें, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले अभी तक हमने लाइफ साइकिल मॉडल सारे पढ़ लिए हैं कि कैसे सिस्टम को बिल्ड किया जाता है, हाउ। तो अभी तक हमने हाउ पे स्टार्ट किया था। अब इसके बाद है हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है, वो अब आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो नाउ सिस्टम एनालिस्ट एनालिसिस क्या होता है? द फर्स्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एनी प्रोजेक्ट। कोई भी एक्टिविटी, किसी भी प्रोजेक्ट की पहली जो एक्टिविटी होती है वो होती है सिस्टम एनालिसिस। जिसका काम होता है, जैसे जिसका मेन रोल है कि अंडरस्टैंड करना प्रॉब्लम को क्या होता है बिफोर डिजाइनिंग द सॉल्यूशन। जब तक आपको चीज की ग्रेविटी, जब तक डिटेल्स ना पता हो, तब तक आप उसको डिजाइन ही नहीं कर सकते। तो इस एनालिसिस मतलब यू हैव टू एनालाइज द सिस्टम। ओवरऑल पिक्चर देखनी पड़ती है कि हाउ मेनी सिस्टम्स आर देयर, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेशंस, टेक्निकली विजिबल है या नहीं है। सो बहुत सारी चीजें होती है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। विदाउट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ सेटिस्फैक्टरी सिस्टम। जैसे कि अगर आपको कोई भी चीज बनानी है, जैसे आपको अगर वेजिटेबल, आपको कुछ भी अगर डिश बनानी है, तो यू नीड दैट इंग्रेडिएंट्स एंड यू हैव टू हैव अ प्रॉपर प्रोसीजर, थॉट, द क्वांटिटी, है ना? those things you need in order to make a good recipe. So that is how to start. You need to analyze the system first. Then let's say the first phase of every process is recognition of the need. Recognition of the need is the very first step. Someone identifies the problem कि यार ये प्रॉब्लम है या फिर ये अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जनरली प्रॉब्लम ये एवरीथिंग अराइजेस विद सम ट्रिगर। सो जनरली ट्रिगर्स क्या रहते हैं? जैसे करंट सिस्टम बहुत ही स्लो है या फिर बहुत ही एक्सपेंसिव है या उसमें बहुत सारे एरर्स हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप कोई मैनुअल रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आता है एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए पार्टीज आती हैं। यू हैव आप एक फॉर्म देते हो, वो फॉर्म को फिल करते हैं, फिर वो फॉर्म चेक करते हैं चेकर। उसमें कुछ एरर्स होते हैं, वो वापस से फिलर को देते हैं, फिर फिलर उसको वापस से भर के देता है। तो ये मैनुअल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, टाइम बहुत लगता है, स्लो बहुत है। तो ऐसे को फिक्स करने के लिए व्हाट्स अ सॉल्यूशन? इसको सिस्टम को ऑनलाइन कर दो। सो इस टाइप के ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से नीड स्टार्ट होती है। अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लेट्स कोई स्टार्ट करना चाहता है, ऑनलाइन शॉप अपना स्टार्ट करना चाहता है, तो ये एक रिकग्निशन हो सकती है। कोई लेट्स से कोई न्यू रूल्स एंड पॉलिसी आ गए, फॉर एग्जांपल जीएसटी के कोई नए रूल्स आ गए, जीएसटी पूरा नया आ गया, तो गवर्नमेंट को जीएसटी का पोर्टल बनाना पड़ा, एक बैक ऑफिस बनाना पड़ा जिसमें कि ऑफिसर्स चेक कर सकते हैं, फ्रंट ऑफिस जिसमें कि टैक्स पेयर अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकता है, डिटेल्स चेक कर सकता है। तो ये बनाने पड़ गए बिकॉज लॉ चेंज हो गया। तो विद चेंजेस ऑफ लॉज, फंक्शनैलिटीज, रेगुलेशंस, नए नए सिस्टम्स भी बनाने पड़ते हैं। ये एग्जिस्टिंग को ही मैनिपुलेट करना होता है। कॉम्पिटिटिव प्रेशर एंड न्यू टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल फोन पे, फॉर एग्जांपल जब पेटीएम, फोन पे एंड गूगल पे, ये तीनों प्री कॉम्पिटिटर्स थे इन द यूपीआई स्पेस। बट जैसे ही भारत पे आया, इट स्टार्टेड इंट्रोड्यूस्ड it introduced a QR code scanning payment, that too on all the different vertical or different competitors. So it becomes very helpful for the customers. तो customers को बहुत अच्छा लगा, सबके सब चले गए towards भारत पे, and the name was very attractive because Bharat attached to India. तो ये सब चीजें, it created a competition. So every other company then started accommodating their QR code such that that QR code is compatible with other competitors. So competition pressure is also one of the requirement needs. Then there is, once the need is identified, there is some preliminary investigations that is done. So what are these investigation? First, the thing is, what is the problem really is, कि प्रॉब्लम की रियल कॉज समझना है कि प्रॉब्लम है क्या। सेकंड, हु इज अफेक्टेड एंड हाउ, कि मतलब इस प्रॉब्लम से इफेक्ट कौन कौन हो रहा है और कैसे हो रहा है।
कि यूजर हो रहा है, सिंगल यूजर हो रहा है, या पूरा डिपार्टमेंट इम्पैक्ट हो रहा है, कोई कस्टमर हो रहा है, या फिर कोई मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इम्पैक्ट हो रही है। तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब देंगे जब पहले पता हो कि उससे इफेक्ट कौन कौन हो रहा है। फिर उसका एनालिसिस ये किया जाता है थर्ड, कि इज इट वर्थ इन्वेस्टिगेशन फर्दर, क्या इसका आउटपुट इसके जो कॉन्स हैं उसको आउट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर वो कर रहा होगा तो इसको कंटिन्यू किया जाएगा, एल्स उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। क्विक क्वेश्चन, in system analysis, what is the very first step that begins a new project? So the topic that we are right now going through is the answer to this question, which is recognition of need, option B. Now, who is a system analyst? This is the role, क्या है ये, क्या करता है? So by definition, a system analyst is the IT professional who studies the user's problem, specifies what the new system must do, and acts as a bridge between the system user and the developers. So he's the person sitting in the middle. He acts as a bridge between the end user and the developer, because developer doesn't knows the user, and user has given the problem to system analyst. So he becomes the middleman. Sometimes it is also called a system analyst, and also called as business analyst. Same role. It works mostly during analysis and design phase, but also reviews the testing and deployment. Is the project key communicator. He is the project's key communicators. He talks to everyone, be it technical and non-technical. He is the one. He is a single source point of contact for everyone to reach out to, because he is the center of the system. Now, the analysis as a bridge. So as I told you, system analysis is the bridge between the user and the developer. User gives the needs or problem to the system analyst, and system analyst translates those needs into SRS models and diagrams and give it to the another side, which is to the developer team. It gives the specifications. Now, developer team can speak the technology but not business. User can speak the business but not technology. But system analyst has to understand both the aspects of the work, technology as well as business. So, analyst's value true turns vague need into a clear specific developers can build to. That's the role of a system analyst. Something user gives a vague requirement, he translates it into a technical specified manner in a proper structure prototype protocol, and then it gives to the developers so the developers can develop on it. Then is my job role responsibility. So being a system analyst, my job would be to investigate the current system, finds out how things work together and what's wrong. Secondly, my role will be to gather the requirements from the user. Let's say my user is my management of my of my company. So we'll sit with them, take interviews, we'll have some questionnaires to let them fill. Then I will also have some my observations. We'll go through documentations, and then we'll gather all these things and put a system uh, requirements in a plain form. Now I will specify how the new system will look like. I will have to write the SRS, which is software requirement specification document. I have to write the build the DFT, the decision trees. These things I will have to write it, document it, structure it. Then I have to evaluate the alternatives, like compare different aspects. Like I have to compare financial aspects, technical aspect, resource aspect, time constraints. Everything I have to evaluate. Then I will also have to liaison between the user and the developer, because I'm the bridge between them. And the sixth and the last one is oversee the design testing, because these are the later phases of a development life cycle, development, testing, and maintenance. These takes the maximum of the time. My role as a system analyst doesn't stops at the time when I'm giving my documentations to the team. I also do oversight, seeing the design testing, even the rollout, and even the testing post deployment. Even UAT sign off is given by system analyst most of the cases. So that's the role of a system analyst. Next, the profile of a system analyst, he needs to be a technical skilled, like he should understand system,
hardware, software, database, system design, and everything. He needs to understand these technical peculiarities. Then analysis and problem solving. So he should be able to, like as Elon Musk says, in order to solve any big problem, go to its unit level breakdown, then solve those units and then merge it. Your bigger problem will be solved. So same way, we have to break the complex problems into manageable parts. Second is communication, interpersonal skills. Like I have to talk to different stakeholders, so I have to be communicative. Then is your business and domain knowledge, which means because I'm working with an organization and that organization has a problem, so I should, in order to have a clear understanding so that there is no scope of error, I have to have a good knowledge of the domain, because the user will not give every detail in written. They will give it in a brief, vague way, but I have to drill down. I know the technicality, so I have to make it uh, ask those relevant clarification questions so that it can be designed well. So for that, domain knowledge is necessary. Now last is the management, because I have to coordinate with teams. I don't have to just coordinate single person. When you're coordinating this different teams, planning schedules, leading small meetings, so these needs teamwork. So these are my skills. Now the quick question: which role best describes a system analyst? So it's B, the bridge between user and developers. Now what comes next? After the preliminary investigations are done, there are a few more steps, which is feasibility study, requirement analysis, and SRS documentation. These we'll go through in the next lecture, but right now two things are done: recognition of the need, preliminary investigations, and then the next three will be feasibility study, cost analysis, and SRS document. We'll cover in the next lecture. Um, Quick exam traps. Analyst and programmer are equal. No. Analyst is a specifically he does system design, but program just write the code. Analysis starts with coding. No, it starts from first stage, which is recognition of the need. Then the study would be done. Like in this diagram, recognition of the need is first, then the investigation happens. Communication isn't a skill. No, communication is the most important skill. 85% of the problem in real world is solved by communication. Analysis leaves after SRS. No, we saw that it's needed even after deployment and testing phase also. So here is a quick glance summary what we did so far. You can pause the video and see it. Now a quick practical question. You have to define the system analyst role and list any 5 responsibilities that you think he or she does perform. And why is the analyst called a bridge? What is the reason why it is called a bridge? So you can answer your answer. You can do it in the comment section. I will pin the best one. And in the next lecture, we will cover the feasibility study, and that would cover technical, economical, and operational feasibility study. And see you in the next lecture. Till then, you can subscribe the channel and like the video. Thank you so much.